Well, let's start with this huge update that we are getting with another flashpoint in Delhi that has come to the fore, with a top official in the Vigilance Department writing to the Delhi LG and the Chief Secretary saying that he has apprehensions that their rooms have been bugged and there is a huge possibility of breach of secrecy and tampering of records. He also claims that it is not advisable to send files to the minister in charge. This letter comes a day after the same official sent a letter to the Vigilance Secretary and the Chief Vigilance Officer. Ishika is joining us live. Ishika, this is extremely serious. You have a top bureaucrat alleging that there is snooping into very secret documents and information and official secrets which should not under any circumstances be leaked. Tell us more about what do we know about this letter. What exactly does it communicate? Well, yes, Afrida, but before I tell you this, first let me in fact inform our viewers that after getting the control over services, we have seen a major reshuffle that happened in the services department. In fact, one such letter was in fact given by the Services Minister Saurabh Bharadwaj, which in fact shunted the Special Secretary of Vigilance. Now he in fact has written to the Lieutenant Governor and the Chief Secretary saying that they are in fact apprehending that there was trespassing in the rooms where in fact the confidential documents were kept. Now in this letter he very well mentions that the Honourable Minister, that is Saurabh Bharadwaj, he in fact had given verbal instructions that all the 76 files just hold that thought. I have Harish Khurana of the BJP with me. Mr. Harish Khurana, good evening. The letter that is being written by Special Secretary Vigilance to the Lieutenant Governor alleges that there has been some sort of a tampering, trespassing and snooping into documents in possession of the Vigilance Department. How do you read this particular development, Mr. Khurana? See, the allegation made by Saurabh Bharadwaj, the minister, against the vigilance officer, what we feel is a total false allegation, and to diversify the issue. We should understand the vigilance officer is taking care of and doing an inquiry on a few issues which is directly related to scams related to Arvind Kejriwal government, whether it's liquor gate, whether it's a snoop gate, whether it's a Sheesh Mahal matter. These matters are directly linked with Arvind Kejriwal. So, because they want to diversify the issue, they want to shunt this particular officer out. That's the reason they had made a serious allegation of extortion. I would like to ask Arvind Kejriwal government why they were silent for so many days. You do a press conference daily, but you were silent at that point of time. I mean, the point is, you were silent. On 11th May, you got the power from the Lieutenant Governor, from the Supreme Court to transfer the officers. And 13th May, you have taken action against them because you want to shut down and you want to hide these things. That's the reason you have made this kind of allegation. And I think the Lieutenant Governor and now the court should take a cognizance on this. And the kind of things that are happening is totally unjustified towards these kind of what is happening towards these kind of officers. What is happening right now? If you could expand on what exactly are you trying to say here? Are you saying that this confidential information that should have been in the exclusive possession of the Vigilance Department is being accessed by authorities who are not supposed to get access to these documents? Exactly what I'm saying. This officer was in possession of confidential documents like liquor gate scam, like Snoop Gate. These documents was, in a serious nature and confidential in nature. Okay. And, I think when this officer has been shunted, Arvind Kejriwal wants to take possession of these files, and they want to temper those files. That's the reason he's been shut down right now. This is a very serious charge because you're linking it directly with the excise policy scam, and you're saying that there is an attempt by Aam Aadmi Party to scuttle the probe in that matter? Of course, yes, because this particular vigilance officer, he was taking cognizance of how many scams directly linked with Arvind Kejriwal, whether it's a Snoop Gate, whether it's a liquor gate, whether it's a Sheesh Mahal expenditures.
These are the documents, these are the papers which have been in a serious and a secret nature, and that's the reason he was doing an inquiry on that. And this inquiry can lead to a serious trouble to Arvind Kejriwal government. That is the only reason. When he got the power on 11th May, he has transferred on 13th May. And why he was silent on these kind of extortion cases? I mean, what the allegation he has made on that particular officer, that he was involved in extortion. I mean, for so many months, you were silent on that. You were not speaking a single word. You do a press conference daily. You have not done a press conference, even a single press conference on that issue. But suddenly you came to know that this particular officer is doing extortion, so he'll be shunted out. The reason is not this. The reason is that the particular officer was doing a lot of inquiry which was directly related to Aam Aadmi Party government, and this can lead up to that is a separate issue, Mr. Khurana. You're talking about shunting out certain bureaucrats. Here we are talking about certain documents. An entire list has been put out in this letter by the Special Secretary of the Vigilance Department. Yes. Hear me out. Yes, as you said, the excise matters and policy also included. I was just coming to the point that you already made, that here is a case of a senior bureaucrat saying we had information with regards to excise matters and policy, which also have been accessed. Therefore, as you said, this is a rather serious matter. Go ahead, finish your point, sir. My only point is because this matter is serious, and when this officer is not there, these files can be tampered. And the officer, the letter which has been written by to the Lieutenant Governor, and he's made a serious point that files will be tampered. My point is only this: because this particular officer was taking care of these things, now he's been removed. Those files will be tampered and maybe lost. Maybe will not find anywhere now. Point is this. Okay. Harish Khurana, thank you so much for joining us, sharing your views on this big breaking news. I have Akhilesh Pratap of the Congress Party with us on the phone line. Good evening, Mr. Pratap. We have the letter, in fact, it's running on our screens as well in front of us, which is written by Special Secretary Vigilance to the Lieutenant Governor of Delhi, saying that certain documents which are in exclusive possession of the Vigilance Department have been accessed through snooping, through tampering, through trespassing, saying our rooms have been bugged. These are indications coming in this particular communication from a top bureaucrat. Your response, sir? नहीं, ये जिस ब्यूरोक्रेट ने बताया है उसने कि हमारे रूम में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल सीक्रेट लीक आउट किया गया, टेम्पर किया गया है, बग लगाया गया है, ये कब की घटना है? ये जिस ऑफिसर ने बताया है, ये कब ये चिट्ठी आज लिखी गई है डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर को आज लिखी गई है। डेट आज का है। मैं वही पूछ रहा हूँ, वो आज के डेट है, लेकिन ये जो बग फिक्स किया गया था, टेम्परिंग हो रहे थे, ये कब की है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद की घटनाएं हैं, तो उसके बाद हुई। इन्होंने इस लेटर में जी इन्होंने जो ब्यूरोक्रेट है उन्होंने ये भी लिखा है कि रिकॉर्ड्स इनका he fears that he is apprehensive that the records will be destroyed or might be destroyed. इनका ये इंडिकेशन है कि कुछ जो सबूत है, कुछ जो इंक्रिमिनेटिंग रिकॉर्ड्स है एक्साइज पॉलिसी को लेके, उनके साथ भी छेड़छाड़ हुआ है, ऐसा उनका एप्रीहेंशन है. दैट्स द वर्ड ही हैज यूज्ड इन दिस लेटर. एप्रीहेंशन है तो वो अगर पेपर्स थे तो वो पेपर्स तो जांच एजेंसियों के पास होंगे, इनके पास फिर कौन से बचे हैं? सीबीआईडी के पास. ये दोनों लोग ब्लेम गेम करते हैं, दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं. नहीं विजिलेंस डिपार्टमेंट के साथ भी तो होंगे सर कागजात. क्योंकि उन्होंने पूरा लिस्ट डाला हुआ है. प्रपोजल फाइल ऑफ सीबीआई फॉर अकॉर्डिंग सैंक्शन डाला हुआ है. तो yes, under section 17A of the POC Act and the excise matters and policy. तो ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट भी डाला है उन्होंने. मेरी बात आने दीजिए. मैंने तो यही कहा ना कि ये डॉक्यूमेंट्स तो और ऑलरेडी दूसरों के पास होंगे, तो अगर कोई दूसरे सेम डॉक्यूमेंट की कॉपी इनके पास होगी या दूसरे जांच एजेंसियों के पास होंगे, तो पता लगेगा कि टेम्परिंग किए हैं कि नहीं किए हैं जी. वो तो ऐसा थोड़ी ना कि एक ही कॉपी रही होगी. जब जांच कई एजेंसियां जांच कर रही हैं तो सबके पास वो डॉक्यूमेंट होंगे.
वो डॉक्यूमेंट दिए गए होंगे, जिसके आधार पर कोर्ट में भी मामला गया होगा, उसमें भी लगे होंगे। तो अगर इनके ऑफिस में टैंपरिंग किया गया है तो जो कई और जगह डॉक्यूमेंट है उससे मैच कराना से हो जाएगा। ये सिर्फ कोई पेशबंदी है, ये ब्लेम गेम है, क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं the Special कि बीजेपी Secretary और आम आदमी Vigilance पार्टी is saying that that they are apprehensive the records will be destroyed or might be destroyed. So it's a very serious charge, apprehension expressed in this communication to the Lieutenant Governor. Akhilesh Pratap, thank you for joining us. Let me have Ishika throw more light on this. Ishika, for sake of our viewers who would have just joined us, if you can kind of sum it up for us, what exactly is the allegation here that is made by the Special Secretary of Vigilance Department against possible tampering of highly sensitive documents? Well, in fact, Afrida, the Special Secretary of the Vigilance Department has now written to the Chief Secretary and the Lieutenant Governor saying that they are in fact apprehensive that the confidential documents are in fact, tampered with. Here they are making big allegations of in fact trespassing into the rooms where the confidential files were kept. Now remember, the Special Secretary of Vigilance very well mentions in the very letter that the Minister of in fact, the Vigilance Department, he had in fact given instructions to the assistant directors that all the confidential documents will now not be going to the undersigned. That means, those 76 confidential documents that were with, the undersigned, they were sent to the assistant directors without being examined with the undersigned. So here what, they are making big allegations here that on the 15th at 3 a.m. in the morning, somebody came into the rooms and it is very likely that all these documents were in fact photocopied and then they were sent across. Now here, he has also made this very clear that he has requested in fact the senior officers for the appropriate action on this very issue, because he has said that it is the confidential documents that are in fact touched without the authorization of the undersigned here. So definitely big allegations that is being made here. He has also said that it is not advisable to transfer or send the files, either photocopies or otherwise, to the Honourable Minister. We need to carefully examine before taking a view with reference to the verbal directions of the Honourable Minister. So he had very well made the allegations that in fact all of this trespassing were done. These were breached, the documents were in fact fabricated, and then they were sent without the examination. Now remember, Frida, I'll also like to bring it to the notice of our viewers that on 13th of May, this very Special Secretary was shunted by the Delhi government over the allegation of extortion. So now, what we are seeing here, that, it is a constant tussle between, the Delhi government as well as the services department here. Because, we have earlier seen all the drama that, in fact, revolved around, the Secretary of Service Department and now the Vigilance Department. We'll still have to wait and watch what will be, the statement from the Delhi government. Because here, the allegations from, as you said, from a top bureaucrat, these seem very serious. Over to you. Right. Thanks, Ishika, for joining us. Pulkit is also with us on this story. Pulkit, जिस तरह की जानकारी सामने आई है, ये जो चिट्ठी हमने एक्सेस किया है, विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा लिखा गया है एलजी और चीफ सेक्रेटरी को, इसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी क्या है? व्हाट वाज द रीजन, किस वजह से ये चिट्ठी लिखने की नौबत आई? पुलकित, देखिए, शीश महल से जुड़ी हुई फाइलों को लेकर रिपोर्ट लगातार ली जा रही थी। इस तमाम जो विभाग थे उनकी फाइल ली जा रही थी। विजिलेंस के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं, ये तमाम फाइलें उनके दफ्तर में थीं और इसके अलावा भी कुछ जांच का जिक्र इसमें किया गया है। हालांकि ज्यादातर फाइलें जो हैं वो पीडब्ल्यूडी के टेंडर्स को लेकर थी, 6 फ्लैगस्टाफ रोड को लेकर थी, जो मुख्यमंत्री का आवास है, जिसे लेकर हमने शीश महल स्टोरी चलाई थी। और दूसरी बहुत सारे और मैटर हैं जिनकी फाइलें, इंपॉर्टेंट फाइलें जिनमें सीबीआई की जांच है और तमाम चीजों की जांच चल रही है, उनसे जुड़ी हुई ये फाइलें इस कमरे में मौजूद थी, जिस कमरे का नंबर है 403। और इसी 403 में रात को 3 बजे 3 लोग पहुंचे हैं, उन्होंने फाइलों की कॉपी की है, ऐसी आशंका जताई जा रही है इस शिकायत में। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों ने उन तमाम
फाइलों को देखा है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना सेंसिटिव मैटर है। इसके बाद में अभी इस दफ्तर को सील कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से, और वहां पे पुलिस के 2 लोगों को तैनात किया गया है, और उसकी फोटो भी हम लोगों के पास है जो ये बताती है कि इन फाइलों को कितना खतरा है। जिस समय शीश महल की स्टोरी चलाई थी उस समय भी उपराज्यपाल ने ये कहा था कि इन फाइलों को सिक्योर किया जाए, और उसी के तहत ये फाइलें विजिलेंस विभाग में थी, और विजिलेंस विभाग की चिट्ठी इस ओर इशारा करती है कि इन फाइलों के ऊपर अब खतरा है और तमाम चीजों की कॉपी कराने की आशंका यहाँ पर जताई जाती है। 76 फाइल है जिन्हें 3 से 4 घंटे तक, यानी कि रात को 3 बजे के बाद में कई घंटे तक खंगाला गया है। उन्हें देखा गया है कि उन फाइलों में क्या क्या नोटिंग हुई है और क्या क्या लिखा गया है। जी, जैसा कि आपने कहा, आई वुड जस्ट लाइक टू ट्रांसलेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट Pulkit is telling us, where in this letter as well it's mentioned that apparently preliminary inquiry has revealed the room was opened, the room of the undersigned, which is the Department of Vigilance, was opened, and allegedly there was a photocopy of all records from 15th of May 2023 to 16th of May 2023 up to 3 AM. The undersigned is not sure whether any record or file was taken. जो ये पीरियड है पुलकित, 15 मई 2023 से लेके 16 मई 2023 के ये पीरियड जो पिछली रात का पीरियड है, इतने ड्यूरेशन के अंदर जो ये रूम एक्सेस किया गया उसके ऊपर और क्या डिटेल्स है हमारे पास, कौन इसके पीछे है, क्यों ये एक्सेस किया गया, इस पर भी कुछ और लिखा गया है विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा? देखिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ये नहीं लिखा कि ये 3 लोग कौन थे, किन लोगों से जुड़े हुए थे, लेकिन विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि कई घंटे तक इन फाइलों को खंगाला गया, जिसमें शीश महल से जुड़ी हुई फाइलों का जिक्र किया गया है। टॉक टू एके यानी कि अरविंद केजरीवाल, एके यानी कि अरविंद केजरीवाल से टॉक टू एक प्रोग्राम चलाया गया था जिस पर शिकायत थी, उसकी फाइलें थी, एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी हुई फाइलें थी, और साथ ही ज्यादातर फाइलें पीडब्ल्यूडी और शीश महल से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। और अब इसीलिए इन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसे अब सेक्रेटरी के पास भेजा है, और इसकी जांच हो सकता है कि आने वाले दिनों में हो। इसकी वजह भी साफ है कि अभी इस दफ्तर को सील करते हुए इस पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है ताकि और फाइलों तक ना पहुंचा जा सके। मैं इस विभाग में कई बार गया हूं, इसके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब जाहिर तौर पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी सिक्योर किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये लोग कौन थे जो रात को 3 बजे सचिवालय पहुंचते हैं, उन्हें इजाजत दी जाती है सचिवालय में जाने की। रात को 3 बजे वो विजिलेंस के दफ्तर के रूम 403 में पहुंचते हैं, उन्हें इजाजत दी जाती है कि आप यहां पर जा सकते हैं। तो ये लोग कौन है, क्यों उस दफ्तर में पहुंचे, इन तमाम चीजों की आगे जांच होगी, और शायद दिल्ली सरकार भी इस जांच को कराए, और विजिलेंस डिपार्टमेंट की इस शिकायत के बाद तो जांच लाजमी है। जी बिल्कुल, अभी देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस पे क्या रिस्पॉन्ड करती है, क्या कहती है इसके ऊपर। 10 पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। आई एम रीडिंग आउट द लास्ट वन विच वी हैव हाइलाइटेड एज वेल, वेयर द ब्यूरोक्रेट, undersigned bureaucrat with Special Secretary Vigilance says, I have serious apprehensions that our rooms might have been bugged and there is every likelihood of breach of secrecy, tampering of records and fabrication of records. पुलकित, आप हमें ये भी बता रहे थे कि ये जो कमरा है ये बहुत ही हाईली गार्डेड होते हैं, यूजुअली देयर इज सिक्योरिटी, तो ऐसे में इसे ब्रीच करना क्या ये कहा जा सकता है कि सर्टेनली देयर वुड बी समबडी पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल बिहाइंड दिस? देखिए, इस कमरे में क्योंकि ये सचिवालय के 4थी मंजिल पर बना हुआ 403 नंबर है, और जितनी भी अभी तक दिल्ली सरकार के खिलाफ बड़ी जांच चल रही है जो उपराज्यपाल के बाद चीफ सेक्रेटरी ने असाइन की है, वो विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी देख रहे थे, और उनके ऊपर कार्रवाई की बात कल हम लोगों ने चलाई थी कि किस तरीके से उन्हें फाइलें भेजने से मना कर दिया गया, और ये आरोप लगाए गए हैं उनके ऊपर, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ये एक्शन दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। और अब उनके दफ्तर में पहुंचना और फाइलों को खंगालना बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है, जबकि इसमें जितनी भी फाइलें हैं वो सबसे बड़े मुद्दे जो दिल्ली में हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर उनसे जुड़ी हुई फाइलें हैं। एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी हुई फाइलें हैं, शीश महल से जुड़ी हुई फाइलें हैं, टॉक टू एके से जुड़ी हुई फाइलें हैं। तो ऐसे में ये जांच जरूरी हो जाती है कि आखिर विजिलेंस के इस फ्लोर तक कोई कैसे पहुंच सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर वो पहुंच भी गए तो स्पेशल सेक्रेटरी के रूम नंबर 403 तक कैसे पहुंच गए, जहां पर इतनी इंपॉर्टेंट फाइलें पहले से मौजूद थी। जी
Gee, that is a big question, Pulkit. Shukriya for highlighting the important questions, the big questions that we are asking here. Ishika, thanks very much for giving us the overall context of this letter, which we have accessed here on Mirror Now, that raises some serious questions on incriminating evidence, on sensitive documents being accessed by unknown persons in the office of the Vigilance Department. Pulkit tells us room number 303, the Special Secretary's office, was entered, and this letter coming from the top bureaucrat says the rooms have been bugged. We leave it at that for now. Thank you so much, Pulkit and Ishika, for joining us.